Hello everyone, welcome back to your Super20 Institutes, and I'm here again to teach our physics. So let's start our new topic. So before starting our new topic, we will see what we have done yesterday. So yesterday we have done that is the electric dipole and electric dipole moment. So what is the meaning of the electric dipole here? That is the combinations of the two poles. जो इलेक्ट्रिक डायपोल है that is the combinations of the two poles here and which is separated by a small distance. That means here you are placing a minus q and this is the plus q charge and the distance between them is 2l. So this is known as your electric dipole here. And the next concept that we have done, that is the electric dipole moment. So electric dipole moment, which is denoted by the p vector because it is a vector quantity and it is the product of the magnitude of the charge as well as the distance between them, that is q cross 2l, where 2l is the distance between the two charges. This we have done yesterday. So what is the unit? That is the unit is coulomb meter. So these are the unit of the dipole moment here and its direction from negative to positive. Dipole moment की direction क्या होती है? That is from negative to positive. So this we have done yesterday. So today we will do the next articles which depend on these concepts here. So we need to find that is the electric field due to a dipole. Write down the next article name. That is the electric field due to a dipole on axial line. Here. Yesterday I told you we will do the two concepts. One is axial line and second one is the equatorial line. So first of all we will start doing the when the point is placed on the axial line. So axial line, that is along the x-axis and it is a horizontal line. That means we need to consider a point which is placed on the x-axis and we need to find the electric field on that point. Okay, so first of all we will draw its diagram so that it is clear to all of you. So what is the meaning of this concept? So we are considering the two charges having the charge minus q and plus q. Yeah. And this is the axial line, that is the x-axis we बोल सकते हो, and we are placing here one single point, that is the P here, where we need to find out the electric field intensity. We will not take a point P here, we will take another point, that is the capital A. Is this point. Yeah, on this point we need to find the electric field intensity. So this is the center point, that is O, and here is the distance is L, and this is also a L. Yeah, and again the point O to A तक का जो आपके पास distance है, that is the small x. Okay, now you can see the electric field due to the negative charge. जो negative charge है, ये जो आपके पास test charge है, ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा? Attract करेगा. Attract करेगा due to your first charge. That means इसकी directions क्या होगी? Towards the negative charge. So similarly, that is your second charge. Second charge जो है आपके पास, ये आपके पास first है, ये आपके पास second है. सेकेंड चार्ज आपके पास क्या पॉजिटिव पोलैरिटी का है, तो यहाँ पे आपके पास कोई डिस्चार्ज पड़ा तो ये चीज को क्या करेगा? रिपेल करेगा. सो रिपेल करेगा. यू कैन सी ये जो आपके पास इसकी फील्ड आ रही है, ये आपके पास क्या कंसीडर होगी? E1 एंड हियर यू विल राइट द E2. यू कैन सी वन थिंग, दैट इज E2 का जो मैंने एरो है उसकी लेंथ क्या बनाई है? लार्जर बनाई है एज कंपेयर टू द E1. क्यों बनाई है? क्योंकि जो आपके पास ये पॉइंट है वो नियर टू द सेकंड चार्ज है और सेकंड चार्ज क्या करेगा? अपना ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा इस पॉइंट के ऊपर और इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये था आपके पास इसका डायग्राम. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट A here. So we also know that in this case E2 is greater than E1. कि जो आपके पास क्या आ रही है? सेकेंड ड्यू टू द सेकेंड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है which is greater as compared to the electric field due to the first charge. Okay, now we need to find the net electric field at that point. So आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं?
net electric field is given by, I will write in a short so that it is clear to all of you. That means E2 minus of E1 here. Clear? So E2 minus E1. So this is the formula. We will take it as a first equation. Now we need to calculate the value of the E2 as well as the E1. So we know that E1 is equal to KQ divided by R square. Its value is this. So KQ will remain as it is. Now what is the value of the R? Due to 1. L plus X. This is small distance is L. This is the X. A point से लेके first class का distance है आपके पास L plus X and its whole square. Clear? या फिर इसको x plus L भी लिख सकते हो. Choice is yours. Second is similarly E2 due to the second charge, that is again KQ divided by R square, and you will write it like this, KQ upon. Now you need to find this distance. This distance, that means x minus L. तो आप इसको क्या करोगे? Subtract करोगे x minus L and its whole square. So these are the two values of the E1 and E2 here. Now you can put these values in your first equation. You will get the final result. Put from equation 1 we get, yes, E2 minus of E1 here. That is the net electric field E net. Yeah, E net is equal to E2 minus E1, and here you will write these values. That is E2 is KQ divided by x minus L and its whole square minus KQ divided by x plus L and its whole square. Now next step is the journal calculations, which is the mathematical calculations. Try to sort out this. That is K and Q you will taking it outside, and inside of the bracket you will get the term 1 upon x minus L and its whole square minus of x plus L and its whole square. Clear? So in the next step you will take a LCM of these two equations, that is the KQ, and here you will get the LCM is x square minus L square and its whole square. क्या? और ये टर्म इस साइड शिफ्ट हो जाएगी, आपके पास न्यूमिनेटर में you will get x plus and its whole square minus x minus L and its whole square. So in the next step you will open its whole square. Whole square का फॉर्मूला क्या होता है? A square plus B square plus 2AB. Yes. So here you will write KQ and x square plus L square plus 2xL minus x square minus L square plus 2xL again. And in the denominator the term will remain as it is. Now the similar terms can be cancelled out from here because these are the similar terms but opposite in sign. So you will get the final result KQ into 4xL and divided by x square minus L square and its whole square. Is it clear? So in the next step what we will have to do? I will do some arrangement, rearrangement हम इसको बोल सकते हैं. You are finding here the E net. So I will writing it here like a, okay, 4 को मैंने कैसे break करना है? 2 multiply 2. Clear? 2kx and further I will write q into 2l. Clear? टर्म वही है, सिर्फ 4 को मैंने ब्रेक कर लिया, 2 multiply 2. एक तो मैंने k के साथ 2 को प्लेस कर दिया, सेकंड मैंने l के साथ प्लेस किया, and in the denominator the term will remain as it is. आप इसको as it is लिखोगे, no need to change anything in this. And in the next step you will see what is the value of the q into 2l. Yes, who will tell me? That is dipole moment q into 2l. Clear? ये आपके पास क्या होता है? dipole moment होता है. तो अब हमने क्या करना है? इसको चेंज करना है. So you will write kx and here you will get the p and divided by x square minus L square and its whole square. This is your net electric field on the axial line. Is it clear? So in the next step you can see ये आपके पास क्या आ गया? इसका रिजल्ट आ गया, where p is the dipole moment and its value is q cross 2l. So आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यूज को पता होना चाहिए एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए. Then put all the values in this and you will get its final result. So one more thing I will do it here. If I am considering if
small as compared to x. Clear? जो L distance है बहुत ही ज़्यादा small है as compared to x. So it can be neglected as compared to the x square. So that means L square can be neglected. That means L square approaches to 0. हम क्या इसकी वैल्यू को कंसीडर करेंगे? That is it approach to 0. So this equation can be written as E net. Yes, try to do this. What you will get in this? X square minus L square can be removed from here. That means its value is 0. X square minus 0 becomes x square and its whole square. Clear? So in the next step, you will write it like this: kq at p divided by x raised to power 4. One term can be cancelled out from here, and the final result is 2kp divided by x cube. This is your net electric field on the axial line. That's why I am writing here axial. Or from this result, ये तो हुआ आपके पास final result. That means E axial is proportional to 1 upon x cube. Clear? ये किसके proportional आता है? 1 upon x cube के. So if you need to write this in a vector form, why? Because this is your vector quantity. ये आपके पास क्या एक vector quantity है, तो आपको क्या करना है? इसको vector की form में लिखना है. So vector की form में लिखना है, then how you will write this? In a vector form you will write it like this. Because this is a vector quantity, E vector is equal to 2k. p के ऊपर आप क्या करोगे? Vector डाल दोगे, rest of the term will remain the same. So this is the vector quantity. Is it clear? Okay. So now we need to see the directions. What is the value of the k? Yes, who will tell me? 9 into 10 raised to power 9. K की value क्या है? This is a constant term and it's a standard value, so you need to directly use it here. And further, the direction is along the dipole moment. इसकी direction क्या रहेगी? You can see here. जो dipole moment की direction होती है negative to positive. And net electric field की डायरेक्शन भी क्या आ रही है? जहां पे आपके पास मैक्सिमम फील्ड जा रही है, दैट मींस E2 की डायरेक्शन. तो आपके पास P वेक्टर और E वेक्टर एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? पैरेलल आ रहे हैं, हैविंग द सेम डायरेक्शन आ रही है. या तो दैट मींस P की डायरेक्शन आपके पास क्या हुई? नेगेटिव टू पॉजिटिव. क्लियर? और यहाँ पे आपके पास E नेट की फील्ड क्या आ रही है? डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन. That's why they are parallel to each other. एक दूसरे की same direction आ रही है. That means the direction is along the dipole moment. Clear? So जो आपके पास dipole moment की direction रहेगी, वही आपके पास क्या रहेगी? Net electric field की direction रहेगी. Clear to all of you? You can see at once so that it is clear to all of you. That is हमने क्या किया इसमें? हमने सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ किया, then हमने क्या किया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते वक्त हमने क्या किया? उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया. उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया? दैट इज E2 माइनस ऑफ E1 हियर. सो E2 माइनस ऑफ E1 हमने किया और सिंपली वी आर यूजिंग द वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो यू विल गेट इट फाइनल रिजल्ट इन द वेक्टर फॉर्म एज वेल एज इट्स डायरेक्शन. क्लियर? ओके. सो नाउ वी विल डू द सेकंड कांसेप्ट. ओके, रख कर दिया जाए इसको. Now the next concept which is related to this also, but something is different in this case. That means we need to take a point on the equatorial points. That is equatorial length बोल सकते हैं, bisector भी बोल सकते हैं उसको, और perpendicular distance भी बोल सकते हैं. या तो आपने जो point consider करना है वो कहाँ पे consider करना है? आप axial line की बजाय that means you need to consider a equatorial line. Point is on equatorial line. Yes. Equatorial line means perpendicular or bisector. क्या? तो ये आपके पास क्या है कि इक्वेटोरियल लाइन जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा डायपोल के, और उसके बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ द डायपोल से. Here. So first of all we will draw its diagrams. So again we are considering the two charges having minus q as well as plus q polarity
and we are taking a center. You can use your geometrical instruments for drawing this. Actually, my drawing is not a perfect, and I am considering here a point that is A. Here again I am considering here A point. This is the minus Q charge, this is the positive Q charge, and this is the center. From the centers, this length is L again, and this is the L again. Clear? Say clearly आपने centers को draw करना है. So now the electric field due to the negative charge, electric field due to the positive charge. So this distance is x. क्लियर? इसको आपने x कंसीडर कर लिया, पॉइंट A आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इज, ये क्या करेगा, इस पॉइंट को रिपेल करेगा. ठीक है, रिपेल करेगा. तो ये आपके पास क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड E1. दिस इज द नेगेटिव चार्ज, इट्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट. ये क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपके पास, E2. Here this is the E2. Now we need to find this distance. यहाँ A से लेके Q तक का डिस्टेंस आपके पास क्या होगा. तो x square L square, by using the Pythagoras theorem you will get the result x square plus L square on both the sides. In this side it will remain the same, x square plus L square. Is it clear to all of you? Diagram को जरा अच्छे से देखो. If something is wrong then you have to tell me. Yes, E1 and E2 is here, and this angle is theta. This is theta, and this is also a theta. And here, if you will get a central line like this, तो ये आपके पास एंगल क्या आ रहा है, theta, and again theta है. Clear to all of you? Now we need to make a two components here. How we can make a two components? Okay, one thing you can see, that is, if two vectors are there, then their resultant is shown by their diagonal. Yeah, वो diagonal आपका कहाँ से आएगा, सेंटर से आएगा. तो यहाँ से इस डायरेक्शन में आप क्या करोगे, इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करोगे. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने से पहले हम इसको टू कंपोनेंट्स में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे. सो दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट, क्लियर, ड्यू टू द E1, ये आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ कोस एज वेल एज द साइन. तो आप इसको क्या लिख सकते हो, E1 है, दिस इज बिकम E1 sin theta, and this become E1 cos theta here. Here, and this direction if you will see, ये इसकी horizontal line हुई, and this is the perpendicular line. So ये आपके पास क्या बन जाएगा, this length is E2, I will write it like this, E2 sin theta. Here you will make it in a neat and clean way, and this length become E2 cos theta. सिंपली आपने याद रखना है, जिसके साथ आपके पास थीटा एंगल अटैच होता है वो किसका कंपोनेंट रहता है, cos का कंपोनेंट रहता है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो नाउ लेट्स गो फॉर इट्स कैलकुलेशंस. डायग्राम बना लीजिए अच्छे से एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. जिसको कोई भी कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क. अब हम करेंगे इसकी कैलकुलेशंस. इज वेरी इजी. आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए, इसकी डायरेक्शंस प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, सो दैट इट इज क्लियर टू यू. ओके, चलिए देखिए आप ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. या सो अभी हम इसको क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट A. So E1 due to the positive charge, its formula is again KQ divided by R square, and here you will write KQ. What is the value of the R? A to Q, this length here. So A to Q, this length is, yes, x square plus L square and its whole square. इसका स्क्वायर रूट है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, E1 is equal to KQ divided by x square plus L square. Here square root and square can be cancelled out from here. Okay, so next आपके पास क्या रहेगा, that is the next है, similarly try to find out the second one. Yes, second one, that means the E2 आपने find out करना है. E2 को find out कीजिए.
E2 को फाइंड आउट कैसे करोगे आप? यस, सिमिलरली E2 कैन बी रिटन एज दैट इज KQ divided by R square. So KQ divided by R square, that means is equal to KQ divided by square root of x square plus L square, because its values again the same term. And E2 भी आपके पास क्या आ जाएगी, सिमिलर टर्म आ जाएगी. You will write it like this, KQ divided by, try to sort out this x square plus L square. Square root can be cancelled out from here. So if you will see the first and second terms, that means you will get E1 is equal to E2 which is equal to E. आपने इसको क्या ले लिया, एक सिंगल पॉइंट ले लिया. क्यों लिया? क्योंकि आपके पास उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, यहां तक इसको कीजिए. देन नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या रहेगा, दैट मींस वी नीड टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. If we need to find the net electric field, then how you will write it like this? Okay, I will write in the next step. ये तो आपके पास होगी E1 and E2 की वैल्यू. So in the next step, you can see that is the net electric field is equal to, first of all इसका एक small सा डायग्राम देखते हैं आपके पास. कि आपके पास ये जो डायग्राम आ रहा है ऐसे आ रहा है कुछ. क्लियर? यहाँ पे आपके पास A पॉइंट है, यहाँ पे है आपके पास E sin theta, because I am saying that E1 is equal to E2 is equal to E. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ रहा है, E sin theta अगेन. क्लियर? A पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे आपके पास आ रही है E1 which is equal to E and here is E2 which is equal to E. और यहाँ from the center, because इसका रिजल्टेंट है, हम किसके साथ डिनोट करते हैं, इसके डायगोनल के साथ. क्लियर? सो E नेट जो आपके पास आ रही है वो है आपके पास E cos theta and here is again E cos theta, angle is theta and this is the angle of theta. They can be cancelled out because they are equal in magnitude but opposite in directions. ये जो यहाँ पे डायग्राम बन रहा है इसको मैंने सेपरेटली बना दिया A पॉइंट्स के ऊपर. ठीक है, then these can be cancelled out. That means net electric field आपके पास क्या रहेगी, इन दोनों का सम. इन दोनों का सम, that means the net electric field E net which is equal to, इन दोनों को प्लस करोगे क्या बन जाएगा आपके पास, 2E cos of theta here. क्लियर? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या रहा, 2E cos of theta. So now put down the values here. E net is equal to 2, E की वैल्यू क्या है, you can take any one, either you will take a E1 or E2 because both the values are same. So here you will write x square plus L square. Now we need to find the values of cos theta. अब यहाँ पे cos theta तो आ गया. cos theta होता क्या है, yes, base over hypotenuse. याद है ना आप सभी को, remember this, base over hypotenuse. Now you can see in which the two triangles are there. You will take any single one. Suppose that even the right hand side will be here. So in the right hand side base is this, that is L, and hypotenuse is x square plus L square and its square. तो आपके पास क्या बना, base over hypotenuse, base is L and hypotenuse is x square plus L square. Clear है आप सभी को cos की वैल्यू? Now put it here. E net 2kq divided by x square plus L square and multiply with, that is यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, L डिनोमिनेटर में x square plus L square and its square root. Clear? So in the next step, if bases are same then power should be add. तो हम उनकी पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं. That means 2kq, अब 2 को यहाँ से मैं रिमूव करके कहाँ लिखूंगी, L के साथ, kq2L. क्लियर? थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है क्योंकि हमें अपना रिजल्ट जो है कैलकुलेट भी तो करना है. इसकी पावर 1, स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर इज 1/2. So x square plus L square and its power is 1, 1 plus 2 here. That means you will take a LCM here. It becomes, yes, 3/2. Clear? So in the next step we know that we will write, we know k into 2L which is equal to dipole moment. याद है ना आप सभी को, भूलना नहीं है, उसी के बेस्ड है ये. K into Q into 2L is, it can be written as a
P. P is the dipole moment. So in the next step put कर दीजिए इसको, just rearrange this new value. E net is equal to K into P here, and in the denominator you will get a result x square L square and its power is 3 upon 2. So now further again the main step, L is less than x, then L square can be neglected. Yes, and it is approaches to 0. Here try to calculate now. Yes, E net आपके पास क्या बनेगा, K P, L square यहाँ से रिमूव करना है, then x raised to the power square into 3 upon 2. Square can be cancelled out and final result is Kp divided by x cube. क्लियर है? देख लीजिए जरा इसको अच्छे से. Yes. So now I am starting to removing that so that I will end this result. देखिए साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए. तो ये आपके पास क्या बनी, इसकी एक टर्म बनी. ठीक, तो E नेट आपके पास क्या हुआ, Kp divided by x cube. So this is the final result when you are placing a point on the equatorial line. So equatorial line you will get a result Kp divided by x cube. That means आपके पास जो E है इक्वेटोरियल लाइन पे भी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, x क्यूब की. क्लियर? नाउ यू नीड टू राइट दिस रिजल्ट इन अ वेक्टर फॉर्म. इन वेक्टर फॉर्म. सो वेक्टर फॉर्म में आपको क्या करना होता है, इसकी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करना होता है. सो आप क्या लिखोगे, E इक्वेटोरियल which is equal to vector Kp vector and x cube. डायरेक्शन क्या है इसकी, now we will tell you the directions of electric field. डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, P की डायरेक्शन होती है आपके पास नेगेटिव टू पॉजिटिव. क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसकी क्या आ रही है आपके पास डायरेक्शंस, दैट इज A to this point, opposite to the dipole मूवमेंट. क्लियर हो रहा है आपको डायग्राम से? ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मींस इसकी डायरेक्शन इस साइड है और P की डायरेक्शन आपके पास इस साइड है. तो ये दोनों एक दूसरे की क्या आ रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस आ रही हैं. तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज E वेक्टर and P वेक्टर आ रहे ऑपोजिट डायरेक्शन. E वेक्टर and P vector are in opposite direction. Clear to all of you? Any confusion up to this? Okay. Now if it is opposite in directions, vector form में आपने ये result लिखा. क्या डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है तो आप इसको कौन से सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करोगे, विद द सिंबल ऑफ नेगेटिव. और यू कैन राइट इट इन अनदर वे इफ you are taking a perpendicular line or points is on a perpendicular line in a vector form, you will get a result minus of Kp divided by x cube, and here you will put a vector. Here now this article is completed when the point is placed on the equatorial line and you need to calculate the net electric field due to a electric dipole. So in this case we are taking this diagram is look like this. First of all, you are considering a dipole here, one point is here, and break it into its component. आपने इसकी सारी साइड्स को कैलकुलेट किया, लेंथ कंसिडर करी, x कंसिडर करी और उसके टू कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक करा. सिंपल है, जिसके साथ एंगल थीटा बनेगा वो cos थीटा बनेगा, अनदर वन आपके पास क्या रहेगा, sin of थीटा रहेगा. Further you will make this portion separately so that it is clear to all of you. E sin theta and E sin theta can be cancelled out with each other. Why? Because they are opposite in direction and having a same magnitude. Magnitude is same but they lies in the opposite directions. That means it can be cancelled out. Now this thing that is E cos theta and E cos theta, they lies in the same directions. That means the net electric field is depend on this. It should be add. तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो आपने इसको ऐड अप किया और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में से cos ऑफ थीटा की वैल्यू को पुट किया. cos थीटा होता क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. बेस इज
L hypotenuse is x square plus L square. Now further try to sort out this and put down the value of the dipole moment in this case, and in the next steps L square can be neglected and you will get its final result. Further you will write it in a vector form. In a vector form you should take its direction. So electric field आपके dipole के opposite direction में आ रही है. That's why you are putting here negative sign. Negative sign shows that E vector and P vector they lies in the opposite direction. Clear? Clear to all of you? Okay. Now you will see the next one article. Next one and the last one. Clear? अब हम एक article करेंगे. That means if you are comparing one thing more, if you are comparing the axial line result and the equatorial line result, then what you will get? क्या result आ रहा है आपके पास? Compare कीजिए. आपके पास E axial जो है उसका रिजल्ट आपके पास आ रहा था जो अभी आपने किया है जस्ट. क्लियर? ई एक्सियल का रिजल्ट आपके पास 2kp डिवाइडेड बाय x क्यूब. ई परपेंडिकुलर और इक्वेटोरियल का आपके पास रिजल्ट आ रहा है kp डिवाइडेड बाय x क्यूब. सो फ्रॉम दीज इक्वेशंस व्हाट यू विल गेट, दैट इज जो आपके पास ई एक्सियल है. क्लियर? ई एक्सियल क्या आ रही है? 2 टाइम्स ऑफ द इक्वेटोरियल. जब आपने इनको क्या किया, कंपेयर किया, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द पॉइंट इज इक्वेटोरियल. क्लियर? तो ये आपके पास क्या रहा इसका ओवरऑल रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट. ओके. नाउ अभी हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे. तो नेक्स्ट आर्टिकल थोड़ा सा इससे रिलेटेड है, बट उसके लिए हम क्या करेंगे, टॉर्क को कंसीडर करेंगे. क्लियर? इसको कवर अप कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए. चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन. यस. ओके. स्टार्ट राइटिंग. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस. माय आर्टिकल नेम इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल व्हेन पॉइंट इज प्लेस्ड इन अ स्पेस. क्लियर? लिख लीजिए इसको. At any point in a space, at any point in a space. अब स्पेस में वो पॉइंट कहीं भी कंसिडर हो सकता है, which is not mentioned कि आपने एक्सियल लाइन लेनी है और इक्वेटोरियल लाइन लेनी है. That means this point is placed in a space. So first of all, again we will see its diagram, and after that we should calculate its final result. Clear? ओके. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर आपको डायग्राम क्लियर है देन जो ये सारा आर्टिकल है वो 1 मिनट का है. अगेन माइनस क्यू एंड हियर इज प्लस क्यू बिकॉज यू आर कंसीडरिंग हियर अ डायपोल. डायपोल सपोज दैट जो पी पॉइंट है वो कहीं यहाँ पे प्लेस कर दिया. ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे प्लेस किया. दैट मीन्स आपके पास क्या है, ना तो वो इक्वेटोरियल लाइन है ना ही वो एक्सियल लाइन है. द पॉइंट इज समवेयर एल्स. क्लियर? तो अब आपके पास जो एंगल थीटा बन रहा है इसके साथ ऐसे, ये क्या बन रहा है, एंगल थीटा, क्योंकि डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू प्लस टू. तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है. ठीक है? सो आपने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, दैट इज द ए पॉइंट. क्लियर? ए पॉइंट लिया एंड फर्दर आपके पास क्या आ जाएगा कि आपको क्या करना है. हमें पता है अगर हम पॉइंट इस पे कंसिडर कर रहे हैं. क्लियर? तो अगर तो ये एक्सियल लाइन होती हमारे पास, एक्सियल लाइन होती तो उस पर ये पॉइंट कंसिडर किया जाता है. ये डायपोल अगर रोटेट होती है इधर को आता है तो एक्सियल पॉइंट के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, इस डायरेक्शन में रहेगी. ई एक्सियल, एक्सियल को ई ए डिनोट कर दिया मैंने. और जो आपके पास क्या है, अगर यही डायपोल दूसरी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो दैट मीन्स आपके पास कुछ इस तरह से डायपोल का कंसिडर होता. क्लियर? डायपोल जो है वो अनदर टर्म में कंसिडर होता और आपके पास जो अनदर कंपोनेंट इसका बनेगा माइनस क्यू प्लस क्यू. इट्स योर डायपोल एंड इट्स लेंथ इज स्मॉल एल. क्लियर? और एंगल इज थीटा. हियर आपने जो लॉन्ग डिस्टेंस लिया है वो आपके पास क्या ले लिया, ए पॉइंट तक का ये यहाँ तक का डिस्टेंस है, दैट इज द एक्स है. क्लियर? ये है आपके पास एक्स डिस्टेंस. अगर आपके पास क्या है, डायपोल थोड़ा और रोटेट हो जाता है, उसके परपेंडिकुलर आ जाता है.
परपेंडिकुलर आ जाता, दैट मीन्स ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट बन रहा है, p sin ऑफ थीटा, एंड ये कंपोनेंट आपका कौन सा बन रहा है, p cos ऑफ थीटा है। जिसके साथ एंगल थीटा बनेगा वो आपके पास cos का कंपोनेंट बनेगा, और ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट बना, sin थीटा का कंपोनेंट, वेयर p इज द डायपोल मोमेंट। क्लियर? और आपके पास क्या है, ये परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से रहेगी। ये आपके पास कौन सी हुई, E परपेंडिकुलर, और यू कैन से दैट दैट इज द E इक्वेटोरियल लाइन। अब अगेन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही है, टू वेक्टर्स आर देयर, देन इट्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके डायगोनल से आप उसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर? आप टू वेक्टर्स के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द वेक्टर सम, दैट इज E स्क्वायर, E एक्सियल स्क्वायर प्लस E परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 2EA EB cos ऑफ थीटा है। क्लियर? cos थीटा कितना बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, तो आप सिंपली इसको क्या करोगे, सम अप करोगे। क्लियर? तो पहले आप क्या लिखोगे, थीटा इज द एंगल फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। थीटा आपके पास क्या है, एंगल फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। क्लियर? वो एंगल है डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट से। और फर्दर वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू न्यू डायपोल्स। टू न्यू डायपोल्स आपके पास क्या बन रहे हैं, एक तो p cos थीटा बन रहा है, दूसरा आपके पास बन रहा है p sin थीटा। ये एक्सियल लाइन पे बन रहा है, ये इक्वेटोरियल लाइन पे बन रहा है, जैसे आप डायपोल को क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। क्लियर? तो आपने क्या करना है, दैट मींस क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू डायपोल्स। क्लियर? तो वो आपके पास जो टू डायपोल्स आ रहे हैं, टू न्यू डायपोल्स आ रहे हैं, दैट मींस फॉर द p cos थीटा, फॉर p cos थीटा when it is placed on axial line। क्लियर? ये a पॉइंट है, कौन सी लाइन पे प्लेस है, एक्सियल लाइन पे प्लेस है। क्लियर? so further p sin theta when a is placed on perpendicular line or equatorial line। clear to all of you? okay, so now for the p cos theta, अगर आप फर्स्ट केस देखते हो, फॉर p cos theta, ये आपके पास क्या है, एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन है, दैट मींस एक्सियल का रिजल्ट अभी आपने क्या फाइंड आउट किया, यस हु विल टेल मी, E एक्सियल 2kp डिवाइडेड बाय x क्यूब, ये लिखा हुआ है, E एक्सियल 2kp divided by x cube। Here you are taking p as a p cos theta। Clear? So similarly for p sin theta when you are taking a perpendicular line, so when you are taking a perpendicular line, that means you need to take a result kp, E perpendicular is kp, p के साथ कौन सा वेक्टर आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय x क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द पॉइंट इज प्लेस्ड इन अ स्पेस। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या रहेगी, ये देखिए, ये डायगोनल के साथ आप इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ E axial plus E perpendicular plus 2EA E perpendicular cos 90 degree. Cos 90 is 0, then no need to write it here. You will write it directly EA plus E perpendicular and its square. Now all the values from here, E axial की value है, by using these values, yes, divided by x cube and its whole square plus KP sin थीटा x क्यूब एंड इट्स होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टेप हियर यू विल राइट द E net। क्लियर? सिमिलर टर्म्स कैन बी कैंसल्ड आउट और यू विल टेक इट आउटसाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल kp अपॉन x क्यूब, क्लियर, इसका स्क्वायर आएगा और स्क्वायर में स्क्वायर रूट के
साथ कैंसल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स ये स्क्वायर रूट से आप इसको बाहर लिख सकते हो। So inside of the bracket you will get a 4 cos square theta plus sin square theta। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, 4 cos square theta को ब्रेक कर लेंगे टू पार्ट्स में। टू पार्ट्स में कैसे ब्रेक करेंगे, x क्यूब, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी को यूज करना है। 3 cos square theta plus sin square theta। Now who will tell me cos square theta plus sin square theta is 1, because it is your mathematics property। Here its values become 1 and you will get a result 3 cos square theta plus 1 here। clear है यहाँ तक? clear है? E net is equal to simple calculation, cos square theta plus sin square theta is 1 here and you will get a result 3 cos square theta plus 1। now this is your final result, that is the E net। clear? ये आपके पास E net आ गया। आगे आपको क्या करना है, you need to calculate yes tan of theta। एंगल बन रहा है ना इन दोनों के बीच में, आपने क्या करना है, tan of theta को कैलकुलेट करना है। so tan alpha आप यहाँ पे लिखोगे tan alpha, some other angle, that is E perpendicular over E axial। क्या E perpendicular की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, राइट डाउन। E perpendicular is kp sin theta divided by x cube and ये रेसिप्रोकेट हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, 2kp cos of theta है। similar terms can be cancelled out। clear? clear है यहाँ तक? now in the next step E tan alpha is 1/2 sin theta divided by cos theta। now sin theta divided by cos theta is tan of theta here, this is equal to tan of alpha। clear है? where alpha is angle made with the direction of x। ये आपके पास है इसका फाइनल रिजल्ट। so what is the meaning of the alpha is, लिख लीजिए, where alpha is angle made with the direction of x। clear? now if theta is given then you can easily calculate the value of alpha। अगर theta यहाँ पे given है, suppose that its value is 30 or 45 degree, then you can easily calculate the value of the alpha here। clear? so आज हमने 3 articles किए, that's all for today। so first we have done that is the electric field when point is placed on the axial line, electric field when point is placed on the equatorial line, and third is when point is placed on the space। so in the space you should draw your diagram, it's like this, and you need to know about the values of the E axial and E equatorial lines, and after that you should calculate the net result of the electric field। okay, clear? okay, now you can revise your whole topic up to this, so rest we will discuss tomorrow in the next class। thank you very much।